When we welcome international students, we benefit from new ideas and ways of learning and researching coming into our post-secondary system predominantly. However, some of these students have experienced serious challenges navigating life in Canada. A few weeks ago, I announced initial reforms to the international student program, including the development of a new framework to recognize learning institutions that provide top quality services and support, including housing to international students. It would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it'd also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads. It's why we expect learning institutions to only accept a number of students that they're able to provide for, able to house or assist in finding off-campus housing. In welcoming international students, we have a responsibility to make sure that students are supported when they come to our country. We also want to ensure that international students don't become victims of unscrupulous individuals who offer them inadequate living conditions, sometimes even at inflated prices. Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas to ensure that designated learning institutions provide adequate and sufficient student supports as part of the academic experience. In order to achieve this result, it is imperative that we work together with provincial and territorial governments, learning institutions, and other education stakeholders so we can ensure international students are set up for success in Canada. Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them, and they will not like the bluntness of the instruments that we use. Our aim is to strike the right balance between welcoming international students and making sure they have all they need to thrive. I will communicate more on this in due course, but for today, I'm here to announce a few more immediate measures. International students need to be prepared for life in Canada, and we have a responsibility to make certain that they are well supported when they come to Canada. Starting on January 1st of next year, in 2024, the financial requirement for study permits will be raised to reflect the current cost of living. And as such, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves in Canada, moving up from $10,000, as I mentioned in French. Moving to a more accurate cost of living level that helps international students arrive with necessary resources to live and study in Canada. Future increases will be tied to the low income cutoff that Statistics Canada publishes every year, similar to other immigration programs. This cutoff conveys the income below which an individual may be in strained circumstances as they have to spend a greater than average proportion of their income on necessities. Recognizing that students already have to show that they can cover their tuition as well as other travel costs, their cost of living threshold is set at 75% of the low income cutoff rather than 100%, and puts us on par with our competitor countries. So next year we intend to implement targeted pilots that will test new ideas aimed at helping underrepresented cohorts of international students to pursue their studies in Canada. And we also plan to work with institutions, provinces, and territories to provide students with what they need to succeed. And I will have more to say on this a little earlier on in 2024. I'd also like to update you on 3 temporary policies affecting international students that were set to expire by the end of the year. The main purpose for an international student to be in Canada is to study. However, since most students are currently halfway through their school year and some are working full-time to meet their needs, we will extend the temporary policy that has allowed eligible international students to work more than 20 hours per week through till April 30th of 2024, the end of the academic year. We're currently examining options for this policy in the future, but we know that 40 hours a week is untenable if you're a student, and are looking to potentially expand off-campus work hours for international students up to 30 hours per week while class is in session. Our data shows us that 80% of international students work more than 20 hours a week. And finally, in response to the labor market disruptions over the pandemic, we introduced a temporary policy granting post-graduation work permit holders an additional 18-month open work permit if needed. Those with a post-graduate work permit expiring by the end of this year remain eligible to apply, and we won't be extending that policy after that. Protecting and supporting international students from becoming vulnerable, whether that's to bad actors or simply meeting their needs in Canada, is one of the main goals of our review of the international student program.
these students contribute to boosting Canada's economy. Taking these additional steps today contributes to our long-term goal, which is to preserve the integrity of the international student program. It'll be key in all this to work with our provincial and territorial counterparts, which have an important share of the jurisdiction and responsibility in this, as well as other education and stakeholders, including the learning institutions themselves, so that we can ensure that international students really are set up for success in Canada. Thank you, and on that, I'm glad to take your questions. Few updates coming from Canada government right now. Make sure पूरी वीडियो देखना. कुछ ही घंटों पहले एक अपडेट्स गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अनाउंस करे हैं एंड ये इफेक्टिव होंगे कुछ टाइम के अंदर अंदर. सो पूरी वीडियो देखना, आप लोग को आइडिया लगेगा कौन से अपडेट्स दे रखे हैं. मैं आपको मेन अपडेट्स दिखाऊंगा जो स्टूडेंट्स को असर करेंगे, वो वाले अपडेट्स आप लोग को दूंगा. बाकी का जो अपडेट्स है वो आप लोग इंटरनेट पर देख लेना. बहुत सारे, वैसे थोड़े थोड़े तो देखने जाओ तो बहुत सारे दे रखे हैं, बट मेन जो स्टूडेंट्स को असर करेंगे वो तो 2 ही है मेरे हिसाब से जो एक्चुअल में इम्पैक्ट लाएंगे. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सबसे बड़ा गाइस जो अपडेट आया है वो GIC से रिलेटेड है. मैं जब आया था कनाडा तब GIC का जो हमारा भरना होता था हम लोग को GIC में होता है $10,000. ठीक है, इतना हम लोग को GIC दिखाना पड़ता था जब हम लोग स्टडी परमिट अप्लाई करते थे. बट अभी जो स्टूडेंट्स इंडिया में बैठे हैं और कनाडा में स्टडी परमिट अप्लाई करेंगे जनवरी 1, 2024 या उसके बाद, तो ये रूल उन लोगों के लिए है. सो स्क्रीन पे जितना भी आप लोग को अमाउंट दिख रहा है 20,650 या उसके आसपास जो भी आप लोग को स्क्रीन पे अमाउंट दिख रहा है, उतना अभी आप लोग को GIC में दिखाना पड़ेगा. सो अभी ये रूल चेंज किया गया है जस्ट बिकॉज आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे या दूसरे लोगों के वीडियोस देखे होंगे कि कनाडा में कैसी हालत चल रही है, किस तरीके का पार्ट टाइम जॉब का कल्चर है, किस तरीके का अकोमोडेशन चल रहा है, किस तरीके की और चीज़ें चल रही है. तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये रूल निकाला है कि GIC में आप लोग के पास $20,600 होने चाहिए. ये इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पे जब आओगे जॉब नहीं मिलेगी तो 6-7 महीने ये खर्चों के अंदर आप लोग रह सकते हो. सो दैट इज़ वाई आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि अगर आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो इंडिया में तभी यहाँ पे आने के बारे में सोचना, वरना आपको बड़ी दिक्कतें आएगी अगर आप लोग फ्यूचर में भी आने वाले हो तो. ठीक है, सो ये सबसे पहला अपडेट था हमारा GIC से रिलेटेड. मेक श्योर इफ़ यू आर अप्लाइंग आफ्टर जनवरी 1 या ऑन जनवरी 1, 2024 फॉर योर स्टडी परमिट, तो आपके पास GIC में इतना फंड होना चाहिए. उससे पहले कर रहे हो तो बात अलग है. ठीक है, तो ये नंबर 1 था. नंबर 2 है पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड. तो जो भी स्टूडेंट December 7 से पहले स्टूडेंट थे या उन्होंने अपना स्टडी परमिट अप्लाई करा है या जो भी है, तो वो लोग अगर कनाडा में आते हैं तो वो लोग April 30, 2024 तक अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं, मतलब मोर देन 20 आवर्स ऑफ कैंपस काम कर सकते हैं. बट अगर आप लोग अभी अप्लाई कर रहे हो अपना स्टडी परमिट तो आप लोगों के लिए ये रूल लागू नहीं पड़ता है. ये December 7 पहले जो स्टूडेंट्स थे या जो भी उससे पहले वो लोगों ने स्टडी परमिट अप्लाई किया है तो वो लोगों के लिए ये रूल लागू पड़ता है. तो 2 सबसे मेजर अपडेट मुझे लगे स्टूडेंट्स के लिए. मैंने इंस्टाग्राम पे भी इससे रिलेटेड रील डाली है एंड यूट्यूब पे भी वीडियो बना के डाल रहा हूँ. छोटी सी वीडियो है गाइस, जस्ट सो दैट लोगों को पता लगे इस तरीके का अपडेट निकला है. मेक श्योर यू शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. एंड अगर अभी आप फ्यूचर में आ रहे हो तो इस तरीके के अपडेट्स नए बहुत सारे देखने मिलेंगे. बिकॉज आज या कल जो कट ऑफ गया था एक्सप्रेस एंट्री में वो था 550. समझ रहे हो, 500 के आसपास स्कोर चल रहा था एंड अभी डायरेक्ट 550 कट ऑफ निकला है. सो इट इज़ गेटिंग रियली डिफिकल्ट फॉर लोग जो लोग PR अप्लाई कर रहे हैं वो लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू. आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई थ्रू एक्सप्रेस एंट्री. मेरा प्रोसीजर अलग है, वो मैं आप लोग को बाद में एक्सप्लेन करूँगा. वो चालू है अभी, तो मैं आप लोग को एक बार मेरा PR का कामकाज हो जाता है तब मैं वीडियो बना के आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा सो दैट एक क्लियर कट आइडिया मिले. बट अगर आप लोग फ्यूचर में यहाँ पे आ रहे हो तो ट्राई टू गो फॉर यूनिवर्सिटीज़ नॉट फॉर कॉलेजेस. एंड वो यूनिवर्सिटीज़ टोरंटो से जितनी दूर हो उतना अच्छा है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो आगे की वीडियोज़ आएगी उसमें आप लोग को समझ आएगा क्यों मैंने ऐसा बोला है. ठीक है, तो पूरा एक क्लियर कट आप लोग को आइडिया मिलेगा मेरी फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर. बट ये 2 मेजर अपडेट्स थी जो आप लोग को पता होनी चाहिए. मेक श्योर यू शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. एंड $20,000 काफ़ी होते हैं गाइस. अब ये लोगों ने $10,000 इंक्रीमेंट कर दिया है सीधा. सो जो भी अगर कोई बंदा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता होगा और इस तरीके की हालत होगी तो पहली बात तो उसको यहीं पे झटका लग जाएगा. सो ये इसीलिए किया है ताकि ये एक्चुअली में देखने जाओ तो ये सेफ्टी है गाइस आपकी. बिकॉज इंडिया में अगर आप 10,000 डाल देते हो ना तो वो पैसा आप ही का है, आप ही को मिलने वाला है. बट यू आर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट और एनीथिंग ऑन दैट. ठीक है, बिकॉज बैंक में रहेगा तो कुछ थोड़ा 1% या 2% इंटरेस्ट मिलेगा, इस पर कुछ भी नहीं मिलेगा. तो $20,000 आप बेसिकली बैंक में रख रहे हो, पड़े रख रहे हो खाली. यहाँ पे आके अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए.